बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गैस वेबिनार में आप सबको इंडस कंसोर्शियम और ग्रो ग्रीन नेटवर्क की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। वी वेलकम यू ऑल इन द वेबिनार ऑन द ग्लोबल गैस क्राइसिस एंड क्यूरियस केस ऑफ एशिया एंड पाकिस्तान। LNG का आलमी फैलाव, एशिया और पाकिस्तान में LNG का बढ़ता हुआ बहरान आज के इस वेबिनार के मौजू होंगे। प्रोग्राम के बाज़ाब्ता आगाज़ के लिए मैं गुजारिश करती हूँ इंडस कंसोर्शियम के CEO मोहतरम हुसैन जरवार साहब से कि वो अपने तारुफी कलमात कहें। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर हुसैन जरवार, CEO इंडस कंसोर्शियम, फॉर द इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ LNG इन पाकिस्तान। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच फिजा। सबसे पहले तो मैं इंडस कंसोर्शियम, ग्रो ग्रीन नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी कोएलिशन पाकिस्तान और अलायंस फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड क्लीन एनर्जी, ये वो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में एनर्जी ट्रांजिशन पे काम कर रही हैं। तो उन तमाम साथियों की तरफ से हमारे जो आज इस प्रोग्राम में स्पीकर्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूं। मिस्टर रॉबर्ट जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के, और मिस वर्दा एजाज जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम इन तमाम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के तरफ से वेलकम करते हैं। On the behalf of Indus Consortium, Grow Green Network, Renewable Energy Coalition Pakistan, and Alliance for the Climate Justice and Clean Energy, which are the civil society organizations and groups working on the just energy transition in Pakistan. I would like to welcome Mr. Robert. He is the research analyst of the Global Energy Monitor, and Ms. Warda Ajaz. She is the project manager of Global Energy Monitor. For their valuable participation in the webinar on global gas crisis and the curious case of the Asia and the Pakistan. And this webinar will enhance the knowledge of the civil society organizations, especially the groups who are working on the just energy transition in Pakistan. As you all are aware that gas reserves in Pakistan are depleting at fast pace due to increasing domestic, residential, and industrial needs. That is one of the reasons that government is relying on the LNG to overcome the demand in future. But the current rising prices of the LNG is one of the factors which is actually affecting to the energy security of Pakistan, and it is also undermining to achieve the renewable energy targets in overall energy mix of Pakistan. The price of the LNG has been continuously increasing due to supply chain issue, and you all are aware that especially it has connection with the Russia and Ukraine war, and Pakistan is already facing economic crisis. Due to that, we are unable to procure LNG shipments from the spot market because of a limited foreign exchange reserves. And currently, Pakistan has two long-term contracts with Qatar for LNG import, which covers up to 60% of Pakistan's LNG needs, whereas the remaining needs are procured from the spot market, depending on the demand. And currently, there are 4 LNG terminals proposed to construct at the Port Qasim, Karachi, while 2 are already active. And the Green members has already visited one of the terminal for their Expo year visit last year. The impacts of these infrastructure projects can be observed in the form of mangrove cutting, and you all are aware that mangrove forests are the breeding ground for the fish. They are the natural carbon sinks as well, and marine ecosystem and protection from cyclones and tsunami is one of the function of the mangrove forest. So the cutting of mangrove forest is actually making vulnerable to the disasters to those coastal communities. And we are witnessing that currently the gas and LNG are considered as a transitional fuel in the energy transition debate, especially by the international financial institutions, because recently the Asian Development Bank has initiated energy transition mechanism in Pakistan, and we are not sure, but actually
many private sector financiers, they are still believe that gas is a transitional fuel from the coal, but we all know that that's false solution. That's why the civil society of Pakistan, different groups, Indus Consortium, Grow Green Network, Renewable Energy Coalition Pakistan, and Alliance for the Climate Justice and Clean Energy, they all are working on the just energy transition question and demanding that the multilateral development banks, development finance institutions, corporations, and private sector should invest in the renewable energy in Pakistan and ensure the energy security. So with this context, I would like to thank you again, Global Energy Monitor team, to be part of this webinar, and they will be enlightening us about the topic. So in few words with the Urdu audience, آپ تمام ساتھیوں کو پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گرو گرین نیٹورک، انڈس کنسورشیم، رینیوبل انرجی کولیشن پاکستان اور الائنس فار کلائمیٹ جسٹس اینڈ کلین انرجی جو ہے وہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن کے سوال پہ پاکستان میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں مختلف جو ہم نے ریسرچز کی ہیں کہ پاکستان میں نیچرل گیس جو ہے اس کے ریزرو بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی گھریلو بھی ضرورت ہے، کمرشل بھی ہے، اور اس کے علاوہ ریزیڈنشل بھی ہے. تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ RLNG پہ ریلائی کر رہی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نئے کچھ LNG ٹرمینلز بھی جو ہے وہ پلان کیے ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ کچھ پچھلے بھی ہیں. لیکن کیونکہ LNG جو ہے وہ کافی مہنگی ہے گیس ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان جیسا ایک ملک جس کی اکانومی جو ہے وہ کافی ویک ہے تو وہ خرید نہیں کر سکتا، اور موسٹلی ہم اسپاٹ مارکیٹ سے جب خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ انرجی ٹرانزیشن میں ایک اس کو فالس سلیوشن کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. وہ ایک طرف تو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پہ اس کے اثرات ہیں، انوائرمنٹ پہ ہیں، مینگرووز پہ ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ وہ ایکچوئل جو رینیوبل انرجی کے سورسز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ میں بھی ایک رکاوٹ کے طور پہ موجود ہے، اور ایک فالس سلیوشن کے طور پہ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. تو ہم جتنے بھی سول سوسائٹی کے گروپ، کمیونٹیز جو کہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن پہ کام کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں، اور لاسٹ ایئر ہم نے یہ کلائمیٹ انڈیوسڈ فلڈ بھی دیکھا ہے، تو وہ تمام گروپس یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ رینیوبل انرجی پروموشن میں اپنی فائنانسنگ جو ہے وہ انویسٹ کریں، اور جو فالس سلیوشنز ہیں گیس کی ٹرانزیشن کے فرام کول وہ اس کو ختم کیا جائے. تو ایک دفعہ پھر میں گلوبل انرجی مانیٹر کی ٹیم جو ہمارے ساتھ موجود ہے، مسٹر رابرٹ اور وردا اعجاز، ان کو ویلکم کرتا ہوں آج اس ویبینار میں، اور امید ہے کہ آج ہم ان سے بہت سیکھیں گے گیس کا جو ایشو ہے گلوبلی اور پاکستان کا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ حسین صاحب، اور آپ نے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ تفصیلی اور مگر جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے جو ہے وہ LNG کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں دیا. اس پر جو ہے وہ مزید ہمارے جو اینالسٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہی اس پر بات کریں گے، اور جو آج ہمارے مقررین ہیں ان میں جو ہے وہ گلوبل انرجی مانیٹر کے انرجی اینالسٹ محترم رابرٹ روزنسکی اور پروجیکٹ مینیجر محترمہ وردہ اعجاز صاحبہ، وہ ہمارے پینل میں شامل ہیں. اور تھوڑا سا گلوبل انرجی مانیٹر کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ توانائی پر تحقیق اور معلومات فراہم کرتا ہے. اور ڈاکٹر وردہ اعجاز جو ہے شی از ورکنگ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ایٹ گلوبل انرجی مانیٹر، اینڈ شی پرووائڈس ریجنل سپورٹ فرام ساؤتھ ایشیا فار ویریس جیم پروجیکٹس. اور ڈاکٹر وردہ نے پبلک پالیسی میں اوریگون یونیورسٹی سے سوشو ٹیکنیکل ٹرانزیشن ٹورڈس مائکرو گریڈس اینڈ ادر ڈی سینٹرلائزڈ انرجی سسٹمس میں PhD کی ہے.
ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर से पहले वो नस्ट के एनर्जी सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देती रही हैं। इसी तरह ही रॉबर्ट रोजन्स्की इज अ रिसर्च एनालिस्ट एट ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर स्टडिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। रॉबर्ट जो है वो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर में रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो वॉशिंगटन डीसी के साफ एनर्जी पर काम करने वाले एक थिंक टैंक इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं। रिन्यूएबल पावर, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड यूएस इनोवेशन पॉलिसी पर उनकी रिपोर्ट्स जारी हुई हैं। So we are thankful to Global Energy Monitor team, including Robert and Warda, for their kind presence and extensive working on today's webinar. Contact over to Robert and Warda. Great. Can everyone see the Yes, we can see it very well. सारे साथियों से पार्टिसिपेंट से गुजारिश होगी कि प्रेजेंटेशन के दौरान जो है वो अपने माइक्स ऑफ रखें और अगर आपके जो भी सवालात हैं वो चैट बॉक्स में साथ साथ डालते जाएं। इस प्रेजेंटेशन के फ़ौरन बाद हम सवालात जवाबात का जो है वो सेशन कर रहे होंगे और उसको जो है वो द नॉलेज फोरम की जो लीड हैं मिस ज़ीनिया शौकत वो लीड कर रही होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैट बॉक्स में जो है वो अपने सवालात साथ साथ ज़रूर डालते जाएं। शुक्रिया। ओवर टू यू रॉबर्ट एंड वर्दा। Assalamu alaikum, everyone. As Fiza mentioned, I'm Warda, and my colleague and I are here to give you an overview of LNG build-out in Asia with a focus on Pakistan. Next slide, please, Rob. So let me start by giving you an introduction of GEM, a little bit Fiza also talked about. So GEM is basically an energy research think tank which develops and shares information to support the global clean energy movement. We develop public databases of energy projects, including LNG terminals, gas-fired power plants, coal-fired power plants, renewable energy installations, and as such. This presentation is basically based on our LNG terminal work, which is housed in our global gas infrastructure tracker. Over to you, Fiza, for translation. जी वर्दा, यहाँ पर जो है वो वर्दा ने ये बताया कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जो है वो किस तरह से एनर्जी के जो है वो प्रोजेक्ट्स उनको ट्रैक कर रहा होता है। ये सामने आपको इनकी कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी जो कि उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो इनका जो ग्लोबल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैकर बना हुआ है उसकी फाइंडिंग्स हैं, उस पर ये बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्लीज़। So our global gas infrastructure tracker maintains a database of LNG import and export terminals and natural gas transmission pipelines. Like all other trackers that GEM has, we keep a two-level data system in the global gas infrastructure tracker as well. So there is a database which has the projects, and then for each project, we have a dedicated wiki page, which has further detailed information for the project. Our data is updated annually, and our most recent update records 1,172 LNG terminals, and which amount to a capacity of 4.4 billion tons. Over to you, Fiza. जी, यहाँ पर जो है वो वर्दा बता रहे हैं कि ग्लोबल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैकर जो है वो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर का वो किस तरह से काम करता है। उसमें एलएनजी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बजरिया टर्मिनल और कुदरती गैस की तरसील बजरिया ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को वो ट्रैक करता है। और ये जो डेटा है ये दो लेवल्स पर जो है वो मौजूद है, एक डेटाबेस पर और एक जो है वो gem.wiki के पेजेस हैं, उसमें वो अलग अलग से जो है इसकी सारी तफसीलात आपको मिलेंगी। और ये पूरा डेटा जो है वो एनुअल बेसिस पर वहाँ अपडेट हो रहा होता है। और अभी तक जो है वो जेम ने इस ट्रैकर के थ्रू 1172 LNG टर्मिनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिसकी के पूरी कैपेसिटी जो है वो 4.4 बिलियन टन्स बनती है। नेक्स्ट प्लीज।
So our most recent update of LNG terminals was completed in last summer of 2022. And based on the findings, we published 2 reports. One was focused on the United States and the other one was focused on Asia's LNG plans. So this presentation is mainly based on the findings of the latter report, which is about Asia's LNG plans. Over to you, Fiza. 2022 यानी लास्ट ईयर जो है वो जेम ने 2 गैस के हवाले से बड़ी रिपोर्ट्स पर काम किया। एक तो जो है वो अमेरिका के हवाले से गैस के अपडेट्स थे और दूसरा जो है वो एशिया की जो गैस मार्केट है उसके हवाले से जो है वो डिटेल्ड रिपोर्ट पर काम किया गया और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो मेनली उसकी फाइंडिंग्स उसी रिपोर्ट से हासिल की गई हैं। नेक्स्ट प्लीज। So I'm going to talk briefly about the global LNG build-out, and then I will hand over to Rob, who will, focus on Pakistan's LNG scenario and the risks and challenges that it entails. Over to you, Fiza. वर्दा जो है वो मेनली ग्लोबल एलएनजी का जो फैलाव है आलमी सतह पर उस पर बात करेंगी, जबकि जो है वो पाकिस्तान के एलएनजी के मंसूबे और आगे जो है जो दौर आ रहा है उसमें किस तरह से फैसले करने की ज़रूरत है उस पर रॉबर्ट बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। So next slide, please. So if we talk about the global LNG build-out, here is a map of all the LNG terminals in development that we have in GEMS database. So import terminals are shown here in yellow, and export terminals are shown in purple, and they're sized according to the capacity of the terminals. And you can see here that the ones that have a black border, they are the ones under construction, and the ones without border are those that are proposed. So on the map, you can see, the regions that are predominantly exporters of LNG and the regions that are predominantly importers. And Asia is highlighted here, and you can see that it's really at the center stage of the global LNG build out, both import and, a little bit of export as well. Over to you, Fiza. जी, ये जो दुनिया का नक्शा हमारे सामने मौजूद है इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंपोर्ट के एलएनजी टर्मिनल्स हैं वो येलो या जर्द रंग में आपके सामने होंगे और जो एक्सपोर्ट के जो है वो एलएनजी टर्मिनल्स वो हल्के जो पर्पलिश जो है वो जामनी रंग में आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो जर्द रंग के हैं और उसके अराउंड जो है वो एक लाइन है या बाउंड्री सी नज़र आ रही है, उसका मतलब है कि वो एलएनजी टर्मिनल्स कंस्ट्रक्शन के फेज़ में हैं, जबकि विदाउट बाउंड्री लाइन जो है वो हैं जो तजवीज़ करदा है। इसी तरह ही जो है वो जामनी रंग में भी इसी तरह है कि कंस्ट्रक्शन वाले और तजवीज़ करदा हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि एशिया जो है वो किस तरह से उसमें एलएनजी का फैलाव नज़र आ रहा है और ज़्यादातर वहाँ पर इम्पोर्टेड एलएनजी टर्मिनल्स का जो है वो हमें एक हब नज़र आता है। नेक्स्ट प्लीज़। So here are the figures that we found in our 2022 survey. There's an export capacity of around 800 million tons per annum, which is in development, and that amounts to an investment of around $632 billion. There is an import capacity of around 700 million tons per annum, which is roughly an investment of $165 billion. And these figures are huge because in 2022, the entire LNG trade, the global LNG trade was only 409 million tons. Over to you, Fiza. जी, जब ओवरऑल हम आलमी सतह पर देखते हैं तो उसमें जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी या बरामदी शरह है वो 779 मिलियन टन्स सालाना है और जो दरामदी शरह है वो 682 मिलियन टन्स सालाना है। और अगर इसका मवाजना करेंगे तो ये टोटल जो है वो 409 मिलियन टन्स सालाना बनता है। नेक्स्ट प्लीज। And this is very consequential because all this build out means long-term lock-in into the LNG power industry,
with impacts on energy security, economic growth, and greenhouse gas emissions. And even though there is a notion that LNG can serve as a good bridge fuel, I would say that this is a poor choice considering today's economic and environmental situation. Over to you, Fiza. जी दरअसल ग्लोबल एलएनजी का फैलाव क्यों अहमियत रखता है ये समझने की ज़रूरत है। नया एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ममालिक के तवानाई के मिक्स को दिहाइयों तक असरअंदाज करता है, जिसके असरात तवानाई सिक्योरिटी, इक्तिसादी तरक्की पर होंगे और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है। जबकि एक जो है वो नैरेटिव ये है कि एलएनजी जो है वो एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, मगर जो है वो मैं यही कहूँगी कि एलएनजी के ख़तरात जो है वो उसे साफ़ तवानाई के ज़रिया बनने में एक ज़रिया नहीं बनाते, बल्कि ये एक बहुत ही पुअर किस्म की हमारी सिलेक्शन या चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज़। So if we focus more on regions within Asia, we see that the global, LNG export is basically led by North America, which has over 59% of all such capacity in development. And in terms of countries, this capacity in development is led by the United States, Russia, Canada, Mexico, and Qatar. Over to you, Fiza. जी जब आलमी एलएनजी की एक्सपोर्ट में इजाफे को हम देखते हैं तो जो शुमाली अमेरिका है उसकी उसमें जो है वो लीड रही है, या वो इसमें जो है वो स्टार्ट लेता हुआ हमें नज़र आता है, और उसका जो फ़ीसद या शरह है वो तकरीबन 59% है। और इसमें जो ममालिक शामिल हैं उसमें जो है वो अमेरिका के ममालिक हैं, रशिया है, कनाडा है और कतर है। Next, please. The global LNG import build-out is not surprisingly, it's being led by Asia and Europe. Together, both these regions account for over 90% of the import capacity in development. Asia region has a share of 65% and Europe has a share of about 24%. And both these regions have their own reasons for these big plans for LNG. For Asia, this is mostly driven by their growing energy needs for their power industry, residential and energy sector. And for Europe, this is mostly driven by their energy security concerns. On this note, I would like to hand over to Rob, who will now put the spotlight on Pakistan and give you some insights about that. You, Fiza and Rob. थैंक यू वर्दा। इसमें जो है वो आलमी एलएनजी की इंपोर्ट, सॉरी यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट लिखा हुआ है मगर ये इंपोर्ट की बात है। जब एशिया और यूरोप की बात आती है तो इंपोर्ट में जो है वो एशिया यूरोप का सिर्फ 24% है, जबकि रेस्ट जो है वो पूरा एशिया का जो है वो नज़र आता है। और इन दोनों रीजन्स में जो इंपोर्ट में इजाफा देखा गया है उसके अपनी ही वजूहात हैं। एशिया में जो है उनकी इंडस्ट्री गैस पर चलती है और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और यूरोप के अपने एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। नाउ ओवर टू रॉबर्ट। Thank you, Warda, and thank you, Fiza, and thank you to everyone for the opportunity to speak today. So I'm going to dive a little bit more into Pakistan's LNG situation specifically. रॉबर्ट जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की एलएनजी की सूरत हाल पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। So here is a ranking by LNG import capacity in development among countries in Asia. And we can see that Pakistan, it has the 6th largest LNG build out according to this ranking. Gas, as many of you know, gas is very important to Pakistan's economy. It accounts for about 1/3 of its electricity consumption and is used in the residential, electricity, and industrial sectors, including fertilizer production and textile production. And next slide, or I'll pass to you, Fiza.
जब जो है वो हम पाकिस्तान में एलएनजी इंपोर्ट कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये शो करता है कि पाकिस्तान का जो नंबर है एशिया में इंपोर्ट कैपेसिटी के हवाले से वो नंबर 6 है, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, उसके जो है वो घरेलू सार्फिन भी बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, और उसकी इंडस्ट्री और खुसूसन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार गैस के ऊपर है। नेक्स्ट प्लीज़। Here is an overview of GEM's data on Pakistan's LNG import terminals. So on the left, we have a table showing existing capacity, proposed capacity, capacity in construction, and capacity that's shelved and canceled in our totals. And as you can see, there are 10.4 million tons per annum of existing capacity, which come from 2 terminals. The first of which, Angro LNG terminal, came online in 2015 and began LNG imports into Pakistan. And on the right, you can also see a snapshot of the map on our website, which is one way that you can access all of our LNG terminal data. So we've counted 6 proposed LNG terminals in Pakistan. I know that Hussein had mentioned earlier that y'all had counted 4, so definitely curious to compare our data later. But the terminals that we have on file amount to 22 million tons per annum in total. And I've put 2 examples of these terminals at the bottom of the slide. Tabir Energy, FSRU, which Indus Consortium has written a lot about, and in particular, the impacts that this terminal would have on the local environment and local communities, local fishing villages. And another is Daewoo Gas LNG terminal, which is being promoted by a South Korean company, and it would use a virtual pipeline setup in which LNG would be trucked from the terminal to avoid using pipelines. इस जो है वो स्लाइड में थोड़ा सा डेटा जो है वो जैम का दिया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा एलएनजी के टर्मिनल्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो 10.4 मिलियन टन्स सालाना है, जिसमें कि एंग्रो का एलएनजी टर्मिनल जो है वो पहला टर्मिनल था जो कि 2015 में जो है वो शुरू हुआ। इसके सिवा जो है वो 6 जो है वो ज़ेर गौर मंसूबे हैं जो कि 22 मिलियन टन सालाना के हैं। और यहाँ इस स्लाइड में जो है जो 2 बड़े ज़ेर गौर मंसूबे हैं एलएनजी के, उनका जिक्र किया गया है। एक जो है उसमें ताबीर एलएनजी का टर्मिनल है जिस पर कि इंडस कंसोर्शियम और आप सब लोगों ने काफ़ी काम किया है, उनका प्रोफाइल भी मौजूद है, और कम्युनिटीज़ और बायोडाइवर्सिटी पर जो असरात हैं एलएनजी के उसमें बड़े डिटेल में उसमें बात की गई है। इसके अलावा जो है वो साउथ कोरियन कंपनी का डाएवो गैस एलएनजी टर्मिनल है, यहाँ पर उसकी भी जो है वो हमने शो किया है। इस राइट साइड पर जो है वो आपको मैप नज़र आ रहा होगा जो कि इन पूरे सारे जो ज़ेर गौर और मौजूदा एलएनजी टर्मिनल्स हैं उनकी लोकेशंस को जो है वो शो करता है। नेक्स्ट प्लीज़। So here in brief are some of the challenges that have been facing Pakistan and its gas sector, which again, I'm sure many of you are familiar with. So even before this year, there have been gas shortages, dwindling domestic gas reserves, which are expected to only last for another 12 years at current rates of consumption. There's circular debt within the electricity and gas sector, and unaccounted for gas lost in the system due to leakage and theft, which might amount to about 1/5
of all gas that enters the gas system. And then the European gas crisis over the past year, set off due to the war in Ukraine, has just exacerbated all of these issues. Pakistan has faced an inability to secure LNG shipments as prices have gone high and LNG costs have been volatile due to a tight global market. And in some cases, suppliers to Pakistan, even those that are contracted, have canceled shipments. All of this has resulted in rolling blackouts and additional gas rationing. And the cost of these shipments is also causing foreign currency reserves to dwindle. जी, जब हम पाकिस्तान में गैस के बहरान की बात करते हैं तो 3-4 बड़े जो मसाइल हैं उनकी तरफ निशानदेही होती है, जिसमें कि गैस की किल्लत है और जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं, ज़खायर हैं, उसमें तेज़ी से कमी आ रही है और जो गर्दिशी कर्जा है यानी गैस के और जो बिजली के हवाले से कर्जा है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसके अलावा जो है जो पूरा सिस्टम है उसमें लॉसेस भी हैं जिसकी वजह से भी काफ़ी नुकसानात होते हैं और चोरी भी है। और जो अभी यूरोप में जंग की वजह से जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से जो है इस पूरे गैस का जो मसला है उसका बहरान शदीद से शदीद तर हो गया है, जिसका कि असर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ा है और उसकी LNG की स्पॉट मार्केट में ख़रीदारी के मसाइल ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारे जो इसमें जो लोग थे वो जो है वो पीछे हट गए हैं और उसकी वजह से लोड शेडिंग भी बढ़ी है और गैस की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हुई है। डॉलर के ज़खायर में जो मुसलसल कमी हुई है उसमें भी दरामदात में शदीद दुश्वारी हुई है। नेक्स्ट प्लीज़। Now the big question is, where will Pakistan go next? Because as you may have seen just a week ago, it was announced that imported gas is no longer part of Pakistan's long-term plans. So Pakistan will reverse its strategy and rather turn to coal and renewables to make up some of these energy needs in the future. So that is a big question and something we'll all be watching over the coming years. जी, जो ये अब सारी सूरत हाल सामने है इसमें जो है वो पाकिस्तान अब यहाँ से किस तरफ जाएगा ये एक सवाल है और एक हफ्ता पहले ही जो है वो ये न्यूज़ जो है वो फ्लोट हुई है और ये काफ़ी सारी बातें भी सामने आ रही हैं कि अब जो है वो पाकिस्तान इंपोर्टेड गैस पर जो है वो इन्हिसार नहीं करेगा और वो अपने साफ एनर्जी के ज़राए और जो कोयला है उसको मज़ीद देखेगा। नेक्स्ट प्लीज। Next, I'm going to talk about sort of the competing narratives of where Asia broadly might go next with LNG. There's a lot of uncertainty at this time, and I'm also going to talk a little bit about some of the risks associated with relying on LNG. अभी नेक्स्ट जो है वो मैं इस पर बात करूँगा कि एशिया में जो है वो LNG की जो तरसील है और ये पूरा बिजनेस है वो कैसे जो है वो तशवीशनाक है और जो है वो कैसे उसके बहुत ज़्यादा रिस्क्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। I want to re-emphasize a point that Warda had made earlier in the presentation, that Asia's LNG buildout is really consequential, not only for individual countries' energy mixes, but for sort of the broader trajectory of the whole world's energy system. There is nearly enough LNG infrastructure in development to absorb the 2022 global LNG trade, as we said before.
looking at all LNG import capacity in development globally, 2/3 of it is in Asia. And because LNG infrastructure costs billions of dollars to build and is designed to be used for decades, any infrastructure that does get built will have a big impact on countries' energy mixes and on the state of the global LNG market. इस सारी सूरत हाल के मद्देनज़र जो है हमें कुछ चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा जिसके हवाले से जो है वो एशिया में एलएनजी का जो फैलाव है वो तशवीशकुन है। मिसाल के तौर पर एलएनजी का जो दरामदी इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी हद तक ज़ेरे तामीर है जो कि 2022 की तिजारत के लिए काफ़ी रहा है और जो 2/3 दरामदी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है वो भी एशिया में है और ये बात समझने हमारे सामने है और एक हकीकत है कि एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अरबों में तामीर होता है और ये दिहाइयों तक इस्तेमाल के काबिल रहता है। नेक्स्ट प्लीज। A little bit about the risks of LNG. LNG's risks make it a poor bridge fuel, as it's sometimes been promoted. So the risks fall into a couple of categories. There are economic risks, which we've seen a lot of this year. The fuel price can be very volatile, especially in a tight global market like we see right now. And there's also a risk of stranded assets, that this expensive, long-lasting infrastructure will get built, and if it isn't used for long enough, then it could harm the communities that have come to depend on this infrastructure, and harm the countries and companies that have invested in them. There are also energy security risks. Again, as we saw this year, the risk of canceled or diverted shipments. And then there's always the possibility of supply chain issues, which we've seen in the past too. There are also climate risks. LNG has been promoted before as being a relatively clean fuel. From a climate perspective, this definitely isn't true. The emissions from LNG could be as much as just 1/3 less than that of coal. It really depends a lot on where it comes from, because LNG, it takes a lot of energy to liquefy the gas and to transport it, in addition to the emissions that come when gas is burned. And all along the supply chain, there are opportunities for methane, a potent greenhouse gas, to leak, which increases the climate impacts of LNG. So increased LNG consumption does threaten our international climate goals. And I've included a chart on the right, which shows from the International Energy Agency's net zero emissions scenario, how it projects LNG exports ought to be under that scenario. And it shows that they peak in the middle of the decade. So in conclusion, new gas infrastructure is not an effective clean bridge, in part because the operating lifetime of this infrastructure is just too long, decades. And expanded renewable power and storage can help to mitigate some of these risks. जी जब एलएनजी के रिस्क्स की हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे जो है वो उसमें ख़दशात शामिल हैं, जिसमें कि इक्तिसादी भी है, तवानाई की सिक्योरिटी का भी है और माहौलियाती ख़तरात भी हैं, जो कि एलएनजी को जो है वो हम समझते हैं और एक नैरेटिव है कि एलएनजी या गैस जो है वो एक बेहतर जो है वो मुतबादिल फ्यूल है, मगर ये बात इन सारे जब खदशात को सामने रखा जाए तो वो किसी भी तरह जो है वो एक बेहतर मुतबादिल फ्यूल के तौर पर हमारे सामने नहीं आता है।
इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिस्क के अलावा जो है वो गैस के और एलएनजी के जो माहौलियाती असरात हैं वो भी बड़े ज़माने तक चलते हैं। जो मीथेन है उसके असरात भी जो है वो कोयले से कोई कम नहीं है। और ये जो आपके सामने टेबल नज़र आ रही है ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी की जो है वो नेट ज़ीरो सिनेरियो है, जिसमें कि पूरा जो है वो एलएनजी एक्सपोर्ट्स के हवाले से दिखाया गया है कि ये किस तरह से जो है उसकी एमिशंस जो है, इसलिए कि वो दो तरीके से एमिशंस हो रही होती हैं। एक तो जो है वो लिक्विफाइड का जो उसमें पूरा प्रोसेस शामिल होता है और नेक्स्ट स्टेज में जो गैस को जलाया जाता है। तो दो तरीके से एमिशंस होती हैं जो कि इसको जो एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस की उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाती हैं। नेक्स्ट प्लीज़। And I want to conclude by just saying that new LNG projects are really at a fork in the road. This chart on the right shows BP Energy's 2023 energy outlook. And really, I included it just to show that we don't know what's going to happen. There are a lot of different directions that things could go from here. जी, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करूँगा कि एशिया में जो है जो नए एलएनजी के मंसूबे हैं वो एक अहम दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ तो जो है ये बीपी की 2023 एनर्जी आउटलुक का जो है आपके सामने तस्वीर मौजूद है और 2020 से आगे आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ सिमतों में जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की तरफ लोग जा रहे हैं और एशिया में सारे जो है वो लोग और हुकूमतें जो है वो मुख्तलिफ तज़-ब-ज़ब का शिकार हैं कि इसको किस तरह से आगे लाया जाए, इसलिए कि एलएनजी को काफ़ी सारी मुश्किलात और माहौलियाती ख़तरात का सामना है। जी, नेक्स्ट प्लीज़। So on one hand, there are already in construction 145 million tons per annum of new LNG import projects in Asia. But on the other hand, we see signs that the LNG buildout may be slowing or smaller than expected. In 2022, just 2 million tons per annum of new import capacity came online in Asia. Many projects, as Warda discussed earlier, many projects have been delayed and shelved. And we've seen a couple of instances where the high cost of LNG has been directly pointed to as the reason for that. Last year, LNG imports were down across Asia by 7% and down as much as about 20% in China and India. And demand forecasts for future demand for gas from agencies like the International Energy Agency, Bloomberg New Energy Finance, and Rystad Energy are all showing that they expect less gas to be consumed in the future than previously thought because of the ongoing situation. So the next few years will be really consequential in shaping the energy trajectory of Asia and the energy trajectory of the world and the situation in LNG consuming countries like Pakistan. आने वाले जो चंद साल हैं वो एलएनजी और तवानाई के हवाले से एशिया में जो है वो फैसला कौन है और देखते हैं कि जो एशिया में है तवानाई का ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। हालांकि सूरत हाल इस वक्त ये है कि 145 मिलियन टन सालाना के नए एलएनजी के जो मंसूबे हैं वो ज़ेर तामीर हैं, मगर 2022 में हमने देखा कि सिर्फ 2 मिलियन टन सालाना जो है वो नई इंपोर्ट कैपेसिटी हमारे सामने आई और बाकी मंसूबे जो है वो इल्तवा का शिकार रहे हैं। और जो
पूरे एशिया में जो है वो LNG की इंपोर्ट वो कम होती हुई नज़र आ रही है। जो डिमांड फोरकास्ट है एशिया में LNG की वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। तो आने वाले जो चंद साल हैं वो एशिया और दुनिया की तवानाई के नक्शे पर जो है वो फैसला कौन है। नेक्स्ट प्लीज। And thank you again. We are happy to answer any questions and would love to hear from all of you. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रॉबर्ट। और अब मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा ज़ीनिया शौकत साहिबा जो कि द नॉलेज फोरम को लीड करती हैं कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन को जो है वो मॉडरेट करें। ओवर टू यू ज़ीनिया। Shukriya, Fiza, and thank you, Warda and Robert, for a very insightful presentation, and also something that was very easy to access in terms of language and understanding. So we really appreciate the way you've presented these facts and left us with very important questions. I'll go back to the audience and try to gather any questions to be put before you. मेरी हमारे ऑडियंस से दरख्वास्त होगी कि अभी जो आपके सामने प्रेजेंटेशन शेयर की गई थी जो कि न सिर्फ मालूमात में बल्कि एक जो उसकी गहर मुशाहिदात में भी बहुत पावरफुल थी, तो उस हवाले से आप लोगों के कोई भी सवालात हो तो आप चाहे तो चैट बॉक्स में शेयर करें या फिर आप हैंड रेज करें तो हम उन सवालात को ले सकते हैं। ओके, सो एक रुखसाना मुबारक की तरफ से सवाल है। उनका सवाल ये है कि गैस को पाकिस्तान में मॉनिटर कौन करता है और पाकिस्तान इस सिचुएशन के साथ कैसे कोप करेगा। फिजा, क्या आप इससे शुरू करना चाहती हैं सवाल के जवाब को, और फिर हम रॉबर्ट और वर्दा की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज वो पाकिस्तान स्पेसिफिक सवाल है। बहुत शुक्रिया ज़ीनिया। मैं सिर्फ ये जो है वो आई विल रियली अप्रिशिएट is because few of our participants, they really can deliver their questions in English as well, like Jamshed Sahab is here and he's also raising hand, and Ruxana can also put her question. So give them the turn to talk about their question and present their views. So and we really want to hear from our learned guests speakers. Thank you, Zeenia. Thank you. So, Warda and Robert, would you like to answer this question, particularly about how Pakistan can cope with this situation from the climate change perspective? This whole developing situation. And Pakistan, as you rightly noted, is at kind of a crossroads because of its own domestic economic challenges, as well as the foreign currency crisis. And then, of course, Pakistan is also, especially all last year, we saw how Pakistan is at the receiving end of the climate disasters. So if all of these things are going to be, put together, what is your advice on how Pakistan should be dealing with this situation? Rob, do you want to take that? Sure. I'll say I'm definitely not equipped to have the solution to all of that. It's clearly a really challenging situation. I think from an energy perspective, at least, I think there's value in at least beginning to expand the role of renewables within the energy sector, if not making a really, really, big and rapid shift. Just better understanding the policies and regulations needed to facilitate renewable development, and I think that would help to offset some of the risks associated with importing.
Yeah, and I know that as Indus Consortium had written in their To Be Your Energy briefing, that there's a lot of renewables potential in Pakistan. And at the same time, I think to the extent that existing infrastructure can be used to import gas, rather than building new infrastructure, that would probably be helpful in the country's long-term situation, to avoid building more gas infrastructure that's, again, expensive and might not be used to its full potential. And I would also like to just add to what Rob said, and would like to put out there that we also need some far-sighted energy policies. Like, this recent announcement of, switching to domestic coal. Unfortunately, to me, that just sounds like another hasty decision that's being taken without considering the long-term impacts and sustainability, both in terms of the finances and environment. So I think it would be in the country's best interest if more qualified people sit together and then devise a long-term, far-sighted energy policy for Pakistan, rather than taking hasty decisions like switching from costly LNG to dirty coal, which then again in the next 5 years we will again have to sit down and think about what to do next, where to go next from here. So that's also what I would like to add here. Thank you, Warda, and thank you, Robert. I'll just quickly sum up your answers for the audience's understanding. I'm sure that it was very well described, so I don't have to work much hard, but just to emphasize, वर्दा और रॉबर्ट दोनों ने ही रिन्यूएबल्स के बारे में बात की है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या होना चाहिए। तो इस हवाले से ऑफ कोर्स रिन्यूएबल्स एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर कोई सभी इत्तेफाक करते हैं इसके ऊपर, और जो इसकी क्लीन एनर्जी वाला जो इसका पोटेंशियल है, जो इसके फीचर है, वो किसी और ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर है। तो रॉबर्ट का ये कहना है कि रिन्यूएबल्स को ही लेकर आगे चलना चाहिए, जबकि वर्दा ने बहुत सही तरह से पॉइंट आउट किया कि इस वक्त चूंकि जो क्राइसिस की सूरत हाल है, तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि ममालिक डिसीजन जल्दी में डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन लंबे अरसे के लिए फिर से कोई नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो कोल की तरफ जाए, और डोमेस्टिक कोल की तरफ पाकिस्तान का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वर्दा अपने जवाब में ये कह रही हैं कि इस पर भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी वही रास्ता है जो कि आगे जाके माहौलियाती तौर पे भी और फाइनेंशियली भी नुकसान का बायस बन सकता है। So thank you, Warda, and thank you, Robert. I think we have a few more questions. Okay. मैं हमारे कुछ सामीन हैं, उनको दावत देना चाहूंगी अगर वो सवाल करना चाहते हो। अजहर, आप सवाल करना चाह रहे हैं? We have Ajaz. Yes, I wanted to ask the question, but I think it has Please almost introduce briefly. Yes, my name is Azhar Lashari, and I have been working with Policy Research Institute for Equitable Development, and we are doing our advocacy and media work and research work on Pakistan's transition away from fossil fuels to renewable energy. Yes, I wanted to share. I have already shared in the chat box a news story in which our energy minister is stating that the government is shifting its policy regarding the imported fuels to the indigenous fossil fuel reserves. So I wanted to ask, how do our panelists see this policy shift regarding the shift away from the imported fuels to the indigenous lignite reserves of Thar coal? Definitely, they are more polluting than our LNG. So I think that question has already been responded, and it has been
addressed by Warda and Robert. Absolutely, Azhar. I think that it was a good question, and thanks to Warda, it has been answered also. It's an important point to consider. Just to say it in Urdu के अजहर का सवाल भी यही था कि जो पाकिस्तान की नई पॉलिसी है कोल के हवाले से उस पर हमारे एक्सपर्ट्स का क्या ख्याल है, तो उसके बारे में वर्दा पहले ही हाईलाइट कर चुकी हैं. सो ऑफ कोर्स ये एक अहम मुद्दा है और उसके ऊपर बिल्कुल देखने की ज़रूरत है. अगर मुझे इजाज़त हो फ्लोर की, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी, मे बी फ्रॉम Warda and Robert both. I'll take this opportunity of having the floor on to me and ask a question. So a lot of people here are coming from social movements background, and of course they are connected to people, and there's this whole gap between this whole discussion and conversation on complicated issues like economy and foreign exchange and energy prices and what are we purchasing and what are we committing, and then its impact on the common folks. And of course it is felt on daily basis by the common citizens, and social movements try to be a bridge between the two sides. They are connected with the common citizens, but they also interacting with policies, government, state, etc. So I would like for you to highlight or point out what is it that the social movements should be doing to navigate this whole very complex scenario that is emerging. And so, I mean, what their strategy should be, or what their direction should be in order to, get the government to, or at least kind of help generate the demand for cleaner energy and for energy options that are not leading to the kind of mess that we find ourselves now. And as Robert very clearly pointed out, in short, it is renewables, but we continue to see gas as an interim option, and all those complications that come with it. So is there any advice you have for social movements in order to help the situation? So I think I can take that. So I would say that we should keep doing what we are all doing, but with more force. So as we are a data organization, we are trying to support the grassroots movements. So for my specific project, I'm working, on Asia region specifically, but all our trackers are also working globally with grassroots movements, grassroots organizations to kind of provide data that will form the basis of, the movement, right? So on the basis of the data that we are providing, we would like the organizations on the ground to create awareness and keep the movement in the news. So recently with my project, I've been involved in a briefing series where I'm working with different organizations, different national and regional organizations across Asia, and one of which Azhar Saab, who is also here, he also contributed to our briefing series. He wrote a piece for our briefing series as well. So basically the purpose of that briefing series was to keep the message in the news, to raise awareness about the issues. I think for our part, that is what we can do, and that's what we can do to kind of create the bridge between the people and the policymakers, to raise awareness among the people and put pressure on the policymakers to take the right decisions, to steer our energy policy in the right direction. That's what I had to say about this. And Rob, if you would like to add something. Yeah, I would just add that with our gems.wiki pages, we hope to provide information that is helpful to grassroots movements. So if there are specific projects that you're working on and you have information to share with us about them, yeah, we would love to hear from you.
Definitely. Thank you, Warda, and thank you, Robert. मैं बस क्विकली वर्दा और रॉबर्ट की तरफ से जो एक सवाल हमने रखा था कि समाजी तहरीकों के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है गैस के हवाले से और बहरान के हवाले से, तो दोनों ने ही इस बात पे जोर दिया है कि एक तो जो काम किया जा रहा है उसको और ज्यादा फोर्स के साथ या ताकत के साथ करने की जरूरत है, और दूसरी बात यह है कि इनके इदारे का ये काम है कि ये लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल वो लाइव डेटा होता है जो रेगुलरली अपडेट हो रहा होता है, तो वो एक बहुत मुफीद आपको एक रास्ता दे सकता है, मालूमात दे सकता है, जिसके जरिए अखबारात में, मेन स्ट्रीम मीडिया में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की अवेयरनेस या मालूमात को लेकर जाया जा सकता है और गवर्नमेंट को पुश किया जा सकता है कि वो सही पॉलिसियों को अपनाए। साथ साथ में रॉबर्ट का ये भी कहना है कि अगर आपकी तरफ से भी कोई इस तरह की मालूमात है जो जो नए प्लांट्स बन रहे हैं उनके बारे में, तो वो यहाँ उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। With this, we understand that we are short on time now. It's been an hour. So appreciating the time of all our participants as well as our worthy speakers, I would like to hand it over to Jamshed Farid Saab, who is the lead of Health Foundation and board member of Indus Consortium, to say his concluding remarks. जी जमशेद फरीद साहब, आपसे concluding remarks की दरख्वास्त है। Thank you, Zeenia, for giving me this opportunity. I'm not talking on behalf of just for the Indus Consortium, but also for all the civil society in Pakistan. I think climate change in Pakistan has impacted worstly, and we have experienced in 2022 like cloudbursts and the floods and heavy floods. And, this is, I think, the right time to highlight and initiate the dialogues and the debates over the sources of global warming and the climate changes, like the use of LNGs and the ports. And at the same time, I think this is the right time to think about the alternative renewable energies. Although Pakistan is not a big contributor to the climate change, but suffering a lot for the enjoys of the developing countries. I emphasize once again the enjoys of the developing countries. It is not a simple matter. I believe this is a matter of climate justice and the survival of the mankind on the earth. But for other livings also, not for the human beings on this globe, and for the biodiversity also. So I'm really thankful to Rob, Warda, and also Zeenia, and the team of the Indus Consortium, Mr. Ajaz, Fiza, Qureshi, and also the member organizations and the partner organization of Indus Consortium who are raising awareness about all these matters, especially the expansion of the LNGs and the oils projects in Pakistan. So we hope that our little voices will make a big dent among the think tanks and the policy makers for the survival of humankind. Thank you so much. शुक्रिया जमशेद साहब। मैं फिजा से दरख्वास्त करूंगी कि वो शुक्रिया की कलमात के साथ इस सेशन को ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़ीनिया, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल। जमशेद फरीद साहब has already give his concluding remarks and vote of thanks.
So once again, on behalf of Indus Consortium, Grow Green Network, Alliance for Climate Justice and Clean Energy and Renewable Energy Coalition, we thank you all, Robert, Warda, Global Energy Monitor, Grow Green Network, team, ACJCE, Recoalition, Zeenia, and all. Thank you so much. Thanks to Jamshed Farid Sahab and Hussein Jarwar Sahab. Thank you all. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Thank you.